of you. Today's topic is transgenics in biotic stress management. Okay, in which topic we are going to discuss about the role of transgenic plants and how in biotic stress management and how the transgenic plants acquire the resistance against the biotic stress. First of all, see what is biotic stress. A biotic stress is a stress that occurs as a result of damage done to the plants by other living organism. Okay, so whatever the damage which is caused by other living organism to the plant is known as the biotic stress. बोले तो जो अदर ऑर्गेनिज्म की वजह से प्लांट्स को जो भी डैमेज होता है वो डैमेज को हम बायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से. बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डैमेज कॉज करता है. तो बायोटिक स्ट्रेस इज अ स्ट्रेस दैट occurs as a result of damage done to the plants by other living organism such as bacteria, viruses, fungi, parasites, some beneficial and harmful insects, weeds, and cultivated or native plants. It is a major focus of agriculture research due to the vast economic losses caused by the biotic stress to cash crops. The relationship between biotic stress and plant yield affects economic decisions as well as practical development. Biotic stress also impact horticultural plant health and natural habitats ecology. It also has dramatic changes in the host recipient. Let's have a look over the different biotic stresses in plants. What are the biotic stresses present? Okay, weeds, insects, fungi, bacteria, and viruses, they cause damage to the plants, and hence they included in the biotic stress of plants. See in this slide the response of plants to stress, how the plant responses to these stress. Okay, plants have co-evolved with their parasites for several 100 million years. This co-evolutionary process has resulted in the selection of a wide range of plant defenses against microbial pathogens and herbivores, pests, which act as a minimized frequency and impact of attack. These defenses include both physical and chemical adaptations. For example, utilization of high metal ion concentration derived from soil allow plants to reduce the harmful effects of biotic stress, pathogens, herbivores, etc. At the same time, successful pests and pathogens have evolved mechanisms to overcome both constitutive and induced resistance in their particular host species. So, ये स्लाइड के अनुसार प्लांट एंड उनके पैरासाइट्स का डिफरेंट पैरासाइट जो प्लांट के ऊपर सर्वाइव करते हैं उनका रिलेशनशिप मिलियन ईयर्स पुराना है और ये रिलेशनशिप की वजह से प्लांट्स में बहुत से खुद में डिफेंसेस एक्वायर किए हैं अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर बायोटिक स्ट्रेसेस. एग्जांपल इसमें बहुत फिजिकल और केमिकल एडवांसेस भी है विच इंक्लूड्स द यूटिलाइजेशन ऑफ high metal ion concentration which is derived from the soil. This allows plants to reduce the harmful effects of biotic stresses. तो ये प्लांट ने खुद ने एक्वायर किया है रेजिस्टेंस, उन्होंने उसका खुद का डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है. तो कैसा डिफेंस किया है? तो इसमें फिजिकल केमिकल दोनों ही अडाप्टेशन कर लिया है प्लांट में. फिजिकली भी अडॉप्ट किया और केमिकली भी अडॉप्ट किया. उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि प्लांट हाई मेटल आयन का यूटिलाइज करते हैं सॉइल से जो कि प्लांट को हार्मफुल बायोटिक स्ट्रेस से बचाता है, उनके इफेक्ट से बचाता है. और दूसरा प्लांट खुद में केमिकल चेंजेस करके इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस भी एक्वायर कर लेते हैं पर्टिकुलर होस्ट के अगेंस्ट और पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट. See here in this slide the fungal diseases and whose economic losses is given there. Different crops have whose pathogen and which cause disease. Okay, see here the first crop is the rice. In rice the pathogen is Pericularia oryzae which cause blast disease, and due to that blast disease the total loss cause is the 21%. In case of wheat Puccinia riconidita which cause the brown leaf rust, and due to the brown leaf rust 30% yield loss is occur in the yield of wheat. In maize leaf blight causes 30% loss. In sorghum grain mold causes 18% loss. In pigeon pea wilt causes 24% loss in yield. Chickpea wilt causes 23% loss in yield.
and in brassica, blight disease causes 30% loss in yield. Soybean rust disease causes 23%, and in potato, late blight causes 31% loss in total yield. Okay. Here in this slide, the biotic stress management. A biotic stress management is nothing but the making the plants resistant or tolerant to the biotic stresses, either naturally or artificially, to improve the yield, thereby improve the yield of plant, and thereby it saves the economy. Okay. National Institute of Biotic Stress Management, which is the unique institute to take up the research and education on biotic stress in agriculture, which is situated at Baronda, Raipur, Baronda and Raipur in Chhattisgarh. Baronda, it is located in rural setting about 30 km away from the Raipur city and route to Baloda Bazar. ओके तो बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? तो प्लांट्स को रेजिस्टेंस और प्लांट्स को ऐसा बनाना कि रेजिस्टेंट और टॉलरेंट बायोटिक स्ट्रेस से. इसमें नेचुरली बनते हैं प्लांट्स और आर्टिफिशियली भी बनते हैं, सो दैट अपने को उसका यील्ड ज़्यादा मिलेगा और इकोनॉमी में उसकी हेल्प होगी. तो हेयर NIBSM एक इंस्टीट्यूट है, whose long form is National Institute of Biotic Stress Management, which is located in Baronda, Raipur, छत्तीसगढ़. ओके तो ये इंस्टीट्यूट में स्पेशली रिसर्च किया जाता है बायोटिक स्ट्रेस के ऊपर, एग्रीकल्चर में बायोटिक स्ट्रेस के ऊपर. तो ये मैनेजमेंट होता है बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट. See here the role of transgenic crops or transgenic plants or crops helps in the acquiring resistance against the biotic stress. Okay, the example of these such a transgenic plants are BT crops. BT crop is one of the example which is against the biotic stress. Okay, तो BT crop भी एक एग्जाम्पल है बायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट काम करने का. बायोटिक और इसमें जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं उनमें ऑलरेडी हमने रेजिस्टेंस ऐसे प्लांट्स बनाए हैं कि जिसमें रेजिस्टेंस है बायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट. तो बीटी क्रॉप का एक एग्जांपल है जिसमें हमने रेजिस्टेंस एक्वायर किया है पिंक बोलवर्म के अगेंस्ट. ओके, जो कि एक टिश्यू ईटर है कॉटन क्रॉप में. तो जिसमें बैसिलस थोरिनजेनेसिस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसका जीन ट्रांसफ़र किया है जो कि क्राई प्रोटीन को सिंथेसिस करता है. और उसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके हमने पिंक बोलवर्म के अगेंस्ट और टिश्यू ईटर्स पेस्ट के इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट हमने रेजिस्टेंस एक्वायर किया है. सो बैसिलस थोरिनजेनेसिस इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया that produces proteinaceous crystalline inclusion bodies, and it also produces cytotoxin that synergize the activity of crytoxins, and cryproteins are toxic to insects mainly against lepidopteras but non-toxic to human and animals. BT maize has been transformed with either Cry1AB, Cry1AC or Cry9C to protect it against Ostrinia nuvallius and Sesamia nonagroides, or with Cry1F to protect it against Spodoptera frugiperida, and with Cry3BB, Cry34AB and Cry35AB to protect it against the rootworm of the genus Dibrotica. तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी हेल्प करते हैं बायोटिक स्ट्रेस को कम करने में, मैनेजमेंट करने में. तो उसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया है बीटी क्रॉप, उसमें बीटी कॉटन का भी एग्जांपल है और बीटी मेज का भी एग्जांपल है. बीटी ब्रिंजल इज अनदर क्रॉप विच वाज टारगेटेड फॉर कंट्रोल ऑफ ल्यूसिनोड्स ऑर्बेनेलिस एंड कमर्शलाइज्ड इन इंडिया इन 2008. तो बीटी ब्रिंजल भी एक अनदर क्रॉप है, ट्रांसजेनिक क्रॉप है जो कि टारगेट किया गया है ल्यूसिनोड्स ऑर्बेनेलिस के अगेंस्ट, और वो कमर्शियली अवेलेबल है इंडिया में 2008 से. Okay, BT crucifer vegetables are under development and are targeted against Plutella xylostella. BT rice expressing the Bacillus thuringiensis toxin is also released. BT rice भी release किया गया है. Next, several genetically modified rice varieties have entered and passed field and environmental release trials, and 4 varieties entered pre-production trials in farmers field in 2001. तो राइस का भी मॉडिफाइड वैरायटीज़ उन्होंने सक्सेसफुल हो गया है, उनके ट्रायल, फील्ड ट्रायल और एनवायरमेंटल रिलीज भी किया है, और फार्मर के फील्ड पे उसका ट्रायल 2001 से शुरू है. आल्सो बीटी अल्फा हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग Cry3A gene against Hypera postica for the first time in Iran.
Finally, the Bt trait has been introduced in soybean through either one or two cry-genes among cry1ab, cry1ac, or cry1af. Here in this slide, this chart shows that the transgenic plants help in our transgenic plant has abiotic stress tolerance ability, biotic stress tolerance ability. It has high nutritional quality. It has different pharmaceutical and pharmaceutical properties, and it can produce different edible vaccines. Okay, and it is industrially important. Transgenic plants play a major role in industries for the production of different medicinal plant metabolites. Protease inhibitors. Plant protease inhibitors are able to protect plants against insects attacks by interfering with the proteolytic activity of insects digestive gut. Among the proteolytic protease inhibitors, serine and cysteine protease enzyme are abundant in plant seeds and storage tissues and may contribute to their natural defense system against insect predation. And the first protease inhibitor gene that was successfully transferred artificially to plant species resulting in enhanced insect resistance was isolated from cowpea and encoded the trypsin and trypsin inhibitor. So protease inhibitor क्या है, तो ये इंटरफेयर करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ इंसेक्ट, जो भी बायोटिक स्ट्रेस कॉज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को उसमें इंटरफेयर करके वो उसको डिस्टर्ब करता है और उनको किल करने में हेल्प करता है. और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इंटरफेयर होने की वजह से क्या होता है, तो इट रिजल्ट्स इन द न्यूट्रिएंट डिप्राइवेशन कॉजिंग डेथ ऑफ द इंसेक्ट. तो उनमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है और न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से वो डेथ हो जाती है. और अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिसिटी ऑफ प्रोटीनियस इनिबिटर, and it is divided into 4 different classes, and that classes are serine protease inhibitor, cysteine protease inhibitor, aspartic and metalloprotease inhibitor, bifunctional alpha amylase 1 protease inhibitor. तो स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग उनके ये 4 टाइप्स हैं. serine and cysteine proteinase inhibitor inhibits mainly lepidopteran and colepteran. Most active inhibitors identified is cowpea trypsin inhibitor, transferred into at least 10 other plant species. Protein is an effective anti-metabolite against the range of field and storage pests. Transformed tobacco field tested and caused significant larval. CPTI transformed tobacco field tested and caused significant larval mortality of cotton bollworm. Serine proteinase inhibitor results in up to 100% mortality of first instar cotton leaf worms when expressed in tobacco. Alpha amylase inhibitor. Insect larvae secrete a gut enzyme alpha amylase to digest starch. ओके तो ये इंसेक्ट लार्वी में अल्फा अमाइलेज क्यों सीक्रेट किया जाता है, तो उसका रोल है अल्फा अमाइलेज का, ये स्टार्च को डिग्रेड करता है. ओके एंड अल्फा अमाइलेज इनिबिटर क्या रोल प्ले करता है, तो ये जो एंजाइम है उसको वो ब्लॉक कर देता है, इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है. बाय ब्लॉकिंग द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम बाय अल्फा अमाइलेज इनिबिटर द लार्वी कैन बी स्टार्व्ड एंड किल्ड. तो एक्टिविटी ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा कि वो लार्वी स्टार्च को डिग्रेड नहीं कर पाएगा. स्टार को डिग्रेड नहीं कर पाएगा तो वो न्यूट्रिएंट एक्वायर नहीं कर पाएगा. न्यूट्रिएंट एक्वायर नहीं कर पाएगा तो वो स्टारवेशन के केस में जाएगा, और ड्यू टू द स्टारवेशन फाइनली इट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ दैट लार्वी. ओके तो ये प्रकार का इसमें मैकेनिज्म है. अल्फा अमाइलेज इनिबिटर जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बीन हैज बीन सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म एंड एक्सप्रेस्ड इन टोबैको and which provides resistance against Coleoptera. Lectins are carbohydrate binding proteins found in many plant tissues and which is abundant in seed and storage tissues of some plant species, and which involves in the specific binding of lectin to glycoconjugates located in the midgut of the insects. Tobacco plants expressing a P-lectin were shown to be toxic to the Lepidoptera Helianthus virescens. Insect chitinases. Chitinases is an insoluble structural polysaccharide that occurs
in the exoskeletal and gut lining of insects. It is believed to protect the insect against water loss and abrasive agents. Larvae feeding on the transgenic plants exhibited several growth aberration and died permanently. Other insect resistance genes from the plants, tryptophan decarboxylase from periwinkle was expressed in tobacco, induced synthesis of tryptamine and tryptamine based alkaloids. Pupil emergence of whitefly decrease as a result of feeding on such plants. Resistance to fungal diseases. Chitin constitute one of the major components of the cell walls of many fungal pathogens such as Rhizocotonia solani, and it can be hydrolyzed by chitinase. On the other hand, beta-1,3 glucanase is known as the degraded glucans, which are also present in fungal cell walls. In recent years, the possibility of transforming plants with a gene encoding beta-1,3 glucanase and chitinase, mostly of plant origin, has been explored. Several laboratories have been able to transfer plant or microbial derived chitinase gene into plants and develop transgenic crops with enhanced resistance to fungal diseases. These plants include grapevine, peanut, and cotton. The combined expression of chitinase and glucanase in transgenic carrot, tomato, and tobacco result in much more effective prevention of fungal disease development. Genetic engineering for fungal and bacterial resistance. Host and pathogens shows gene for gene relationship. There are two types of fungal genetic engineering. Two types are incompatible reaction and compatible reaction. Let's see one by one. Incompatible reaction found in biotic biotrophic pathogen, obligate parasites. Example, smut, rust. Alleles for a resistance in host and those for a virulence in pathogen produce specific compounds which recognize each other. When these specific compounds interact, produce resistance response in host, and which is associated with the hypersensitivity reactions triggered by certain unique molecules called elicitors or pathogen origins. Elicitors are recognized by receptors like molecule present in resistant plant, initiates several biochemical reactions and which produce active oxygen species, also which produce phytoalexin biosynthesis, cell wall reinforcement, and release hydrolytic enzyme or inhibitory protease, and which results in the rapid cell death. तो फंगल बायोटिक स्ट्रेस को कैसे किया जाता है, ट्रीट मैनेजमेंट उसका कैसे किया जाता है, तो बाय प्रोड्यूसिंग active oxygen species, by producing different phytoalexin biosynthesis, by producing cell wall reinforcements, and by releasing the different hydrolytic enzymes or inhibitory proteins, or also it results in the rapid cell death. Compatible reaction. Alleles for a susceptibility in host and those for virulence in pathogen produce specific compounds which interact with each other to produce susceptible response is known as a compatible reaction. Lack of interaction between products of genes specifies resistance response in host, which is found in heterotrophic pathogens. Strategies for resistance. Genes which are here are some genes encoded which are insensitive to target enzymes. Genes specifying toxin inactivation, expression of antibacterial peptides, expression of bacterial lysozymes, genes specifying program cell death, RNA interference targeting pathogen or parasite genes. So these are different strategies which are used to manage the biotic stress. Here are other strategies: expression of heterologous phytoalexins, genes encoding ribosome inactivating proteins, expression of heterologous thionines, ectopic expression of pathogenesis related proteins, ectopic expression of chitinase, modification of host protein required for infection of pathogen. So thank you guys. ये लेक्चर देखने के बाद आपको बायोटिक स्ट्रेस क्या है, कौन कौन कॉज करता है, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ कॉटन के क्रॉप, कुछ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट किए हुए क्रॉप और ट्रांसजेनिक प्लांट्स का क्या रोल है, कैसे उन्होंने बायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस एक्वायर किया है, उनके एग्जांपल के साथ इस वीडियो में दिया है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. Okay, if you have any doubt, please mention it in the comment box. Okay, thanks for watching.